Hello everyone, we are back with one more interview review and this time this college is a unique one. इसका टेस्ट भी यूनिक होता है और इंटरव्यू तो बहुत ही यूनिक आप सुनने वाले हैं. दिस इज गोइंग टू रॉक योर माइंड्स अबाउट इंटरव्यू. दिस इज एसडीए बकौनी, मुंबई. इस कॉलेज की यूनिक सिलेक्शन राउंड्स के अंदर अगर आप इसके टेस्ट के बारे में कभी डिटेल में सुनेंगे तो बहुत अजीब लगेगा आपको कि इसके टेस्ट में टेक्नो इंटीग्रेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं. जो रेगुलर एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उसके अलावा इसमें जैसे आपको अरेंज करना है, ड्रॉ करना है, इन सब के क्वेश्चंस भी थे. पर हमारा फोकस आज मोस्टली रहेगा इंटरव्यू पे, ऑल्दो हम टेस्ट के क्वेश्चंस लास्ट में कवर कर लेंगे कि एस डी बकौनी का टेस्ट प्रिपरेशन कैसा रहा. उसी के बाद इंटरव्यू शेड्यूल होता है, राइट? तो वन ऑफ आवर स्टूडेंट इज गोइंग टू हैव इट and one of student is already done with it. So let's welcome who's already done with SDA Bacconi interview on the stage. Welcome. So I hope we are good to go for the question answers round directly for the interview. I hope there was no GD and VAT in there. And directly हम SD Bacconi के question answers round पे अगर बात करें तो please let us know what were the questions and how many duration, कितने पैनलिस्ट थे, सो दैट इनको आइडिया लगे कि आपने रियल में इंटरव्यू दिया है. और टाइमिंग वगैरह क्या था, थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताएं. Okay, so in my email it was written that my interview was scheduled on 12:15, but at the morning I got a call from the college and it was it happened much before. It just happened on 10 o'clock, but I was prepared. I was ready to give the interview. So the interview started at 10:15. There were two panelists, but they were switching the screens. So that means at a time I was just talking to one person, and I don't know that when the second person will just arrive on the screen and he will ask me the questions again. So at first I didn't know there was two panelists till they switched the screens. And the first question they asked me was like, "Tell me something about yourself." Yeah, and it was a brief bio. Then they asked me about my internship, which I told them during my brief bio. And they asked me about why MBA, why this college. And yeah, these were the basic questions they asked me, but I was like kind of. लेट्स कम बैक टू द थिंग्स. प्रीपोन हुआ है, पोस्टपोन तो आपने बहुत बार सुना होगा, इंटरव्यू पोस्टपोन हो जाते हैं. यहाँ पे इनका 2 घंटे पहले प्रीपोन हो गया. सो स्टूडेंट्स बी ऑन योर टोज वेन एवर यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू. किसी भी समय आपका इंटरव्यू किसी भी टाइम पे शेड्यूल हो, यू शुड बी एवर रेडी फॉर इट. सेकेंड थिंग, आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि इनके क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिटेल में वो इसलिए घुस गए क्योंकि इन्होंने इंटरव्यू की इंट्रोडक्शन वाले में ही अपनी इंटर्नशिप का मेंशन किया. और इंटर्नशिप में घुसना उनका जन्मसिद्ध अधिकार था. So they wanted to know more about it, and that's what your hook. You drive our interview way when you give every clue of a special interest in your introduction itself. तो अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा से तैयार करिए, उसमें हुक्स डालिए. तो लास्ट 2-3 क्वेश्चन तक हम समराइज करते हैं ताकि इसको ज़्यादा डिले नहीं करेंगे. जब आप वाई MBA और वाई दिस कोर्स एंड वाई दिस स्पेशलाइजेशन में घुस रहे थे, तो वॉज देयर एनी अदर एरिया दैट दे टच्ड? Yes, actually, मैंने बहुत specifically बता दिया था that I want to do MBA in HR. So they asked me why HR? Was it your favorite subject? क्या आपने इसमें BBA में इसको as a honor लिया था? क्यों HR? Then I told them that I had also done few certificate courses, and उस समय I just talked more about counseling and guidance. So they asked me that if you wanna go for counseling and guidance, then why are you going for an MBA? You can pursue counseling and guidance by just doing a PhD. So that was a point when I was stuck in the interview. Like, now what should I say? But I handled it with my way, and you should with yours. And then they asked me like, why this college? Because as I told them that I want to pursue MBA in HR, they told me that you can go for XLRI or test. Then why this college? Then again I have to give them an explanation that why I want to go for this college, as I didn't wanted to compare the colleges, so I just handled the questions. And rather than that, yes, I wanted them to talk about my internship because that's my strong point. So that's why I just talked about it more and more. So cool. So she handled all the problems and the difficulties of those cascading questions in depth of why this college, why this course, and especially why this specialization. She went into educational counseling stuff because she's quite good at communication. We discussed about it.
कि आपके लिए एचआर वाला स्पेशलाइजेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर उन्होंने एचआर की जगह वो पकड़ लिया जो इनका एक स्पेसिफिक आंसर था. बी रेडी फॉर दिस एज वेल स्टूडेंट्स. आई होप करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ पूछा उन्होंने. No, there was no such questions related to current affairs because the ये HR and why MBA and why colleges में ही my interview was just for more than an half an hour interview. So I think they just wrapped up with why MBA and why this college only. They were just satisfied with my question, and at last they also asked me, "Do you have any questions for us?" And I said no, and then the interview was wrapped up. Okay. So students, finally, there is no predictability in interviews. We can make them predictable by going as many experiences as possible. हम लोगों ने ये देखा है कि बहुत बार ओरिजिन पर, एज वी बिलोंग टू भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा के ही कुछ ओरिजिन्स पर पूरा का पूरा इंटरव्यू निकल जाता है और कोई एचआर और सॉफ्ट स्किल्स वाले क्वेश्चंस नहीं होते. आज इनसे एचआर वाले क्वेश्चन सॉफ्ट स्किल्स वाले में घुसे तो टेक्निकल वाले छोड़ दिए. कभी टेक्निकल क्वेश्चंस में इतना घुस जाते हैं कि कुछ नहीं पूछते. कभी कैपिटल्स और करेंसीज में ही रह जाते हैं. तो नो इंटरव्यूज प्रिडिक्टेबल, but make it predictable by going through as many experiences, and that's the dialogue of PC interview prep series. Thank you everyone. Thank you. Have a nice day.